how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 1st, which is about food and home for animals. Okay, let's start the chapter. All living beings require food to eat and a place to live. Have you ever wondered what the different animals eat and where they live? Let us find out. So students, सभी living beings को क्या food की requirement होती है खाने के लिए and एक जगह place की requirement होती है to live. Right? So in this chapter, we are going to discuss about the different types of animals, that what do they eat and where do they live. Okay, so food for animals. No living being can live without food. Different animals eat different kind of food. Some animals eat plants, whereas some eat the flesh of other animals. There are some animals that eat both. So कोई भी ऐसा living being नहीं है जो without food यानी कि बिना खाने के survive कर सके. हर एक animal की क्या एक different eating habit होती है, different kind of food, different animal eat. Okay, कुछ ऐसे animals हैं जो केवल plants को खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, इनकी मीट को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों ही इनके प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स के फ्लैश को खा सकते हैं. सो नंबर 1 वी हैव प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं उन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर प्लांट ईटर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल काउ, रैबिट, एलिफेंट, जिराफ, दे ईट ओनली प्लांट्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स. राइट? ओके. Now most of the birds, अब ज़्यादातर ऐसी भी birds हैं students which eat grains only. For example, pigeon, hen and squirrel. Deer also eat grains. So basically these all animals are included in plant eaters only. Okay. Next we come to flesh eating animals. Some animals eat flesh of other animals. अब कुछ ऐसे animals हैं जो दूसरे animals के flesh को खाते. They do not eat plants. Okay. Flesh means what? The meat of other animals. Example, lion, eagle, wolf. These are such animals, and ऐसे animals को क्या flesh eaters कहा जाता है. You can see in the picture also. This is lion, eagle, and wolf. They eat the flesh of other animals, and therefore they are known as flesh eaters. Next, some small animals and also some of the birds eat insect as well as worms. अब कुछ ऐसे छोटे-छोटे animals या कुछ birds भी हैं जो कि क्या insects as well as worms को खाती हैं. For example, frog, lizard, spider. Okay? Now. Some animal eat both plants and animals. अब कुछ ऐसे animals हैं students जो कि plants and animals दोनों को ही खा सकते हैं. Example, cat, bear, dog, crow. They eat both, that is plant and animal. Okay? चलो. Now, next topic which we have is homes for animals. So हमने animals की different eating habits को discuss किया. अब हम उनके homes को discuss करेंगे. So animals live everywhere. Animals हर जगह रहते हैं. That is on land and water. And कुछ ऐसे हैं जो land and water दोनों पे ही survive कर सकते हैं. For example, cat, dog, camel. They live on land. Cat, dog, camel जैसे animals जो हैं वो सिर्फ land पे रहते हैं. Right? Fish, dolphin and octopus. Fish, dolphin and octopus they live in water. कहाँ रहती हैं? पानी के अंदर. Then crocodile, frog and tortoise. Crocodile, frog, tortoise ये जो है they can live both on land and water. ये ऐसे animals हैं जो land and water दोनों पे ही easily survive कर सकते हैं. Okay? Next topic is natural homes. So animals generally live in their natural home. These homes protect them from heat, rain and cold. So animals generally अपने natural homes में रहते हैं, अपने natural घर में रहते हैं, and ये जो home है ये इनको heat, rain and cold से protect करते हैं. Different animals live in different types of home. अब different animals different type of homes में रहते हैं. जैसे कि lion कहाँ रहता है? It lives in a den. Rabbit रहता है in a burrow. Snake and rat रहते हैं in hole. Right? Bird makes a nest to live. Bird क्या बनाती है? Birds अपना nest यानी कि घोंसला बनाती है for living. Then a monkey lives on a tree. Monkey कहाँ रहता है? On tree, पेड़ पे रहता है. A bee makes a hive to live. Bee क्या बनाती है? एक hive यानी कि एक छत्ता बनाती है and it lives in that hive only. Then next we come to man-made homes. ये सब natural homes है. अब कुछ homes होते हैं जो by the man बनाए जाते हैं for the animals and they are known as man-made homes. See, domestic और pet animals are kept in man-made homes. जो domestic या pet animals होते हैं उनको man-made homes में रखा जाता है. Like dog. Dog is kept in a kennel. ये dog है and इसका जो घर है जो man-made होता है इसको क्या कहा जाता है? Kennel कहा जाता है. Then horse is kept in a stable. ये क्या है? ये horse का man-made home है जिसको stable बोलते हैं. Fish are kept in an aquarium. Fishes जो हैं जिनको हम एज अ पेट एनिमल घर पे रखते हैं उनको क्या एक मैन मेड होम में रखा जाता है विच इज नोन एज एक्वेरियम. देन काउ इज केप्ट इन अ शेड. काउ का मैन मेड होम इज नोन एज शेड. ओके, चल. सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स एंड द डिफरेंट eating habits of the animals. That's all for the chapter. It's done for today. I hope you all must have understood the chapter very clearly. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.